Hello everyone, how are you? You can just All good, sir. put Hello, your good afternoon, messages sir. in the chat box. Thank you, thank you, thank you. कल कौन कौन कॉल लेके गया था? Just put it on the chat box. Okay, Anupam, you made some good money today? Anyone else? Good, good. Yes, Deepak, thank you. I know you also made some money. Good. Deepak, I think you made about 20,000 rupees. Fantastic. Anupam, what were you carrying? Calls or futures? And calls, which calls? Anyone else? Okay, 41,600 next expiry. Perfect, perfect, perfect. 41,600. Just that you were carrying the, um, yeah, it was in the money. Not deep, but it was in the money. Okay, fair enough. So, कल साफ हो गया था. It was very clear that we will expect a fantastic move. Why I was so confident? I think the first mentoring participants already know, and I had shared the screenshot as well. What did the Nifty do? So let's focus on Nifty primarily because that's the key index. Bank Nifty is a derived index. So Nifty had broken out of the 17,864 range where I'm pointing. Are you able to see my screen? Yes, sir. Great. So perfect. So it had tried breaking this out here, but then it was a little confused. It took support at 17,773. ये जो pivot दिख रहा है आपको, and it bounced back. I was waiting for a strong, convincing breakout. And that breakout happened here. So while it happened here, but it went down, this is where it happened and it started challenging the super trend. This is the super trend. The setting for super trend is 210. So just to let you know, so this had moved out. So today, so this has happened day before yesterday on 14th. And yesterday, there was a clear conviction because it took support at 17,864. And after that support, it moved up and it closed above the super trend. The move was clearly available till 18,120. 18,120, I think मैंने अपने chat में लिखा भी था कि 18,120 का ये level है और 18,140 is the R1. So this is the level for which I will play. So this was very, very clear. I took the trade from here till here. About 17 odd thousand I'd made yesterday, 15, 17, I don't remember exactly. And the balance I made today. So the moment it hit 120, 18,120, I being a conservative trader, my target was met and very peacefully I exited. And now since morning, I am in short positions. And uh, let me explain to you in a manner that you will understand. So this is a short, and I am expecting 4-1. What is this level? 41717. So this level to be achieved, but even if it doesn't achieve, because this is Bank Nifty, थोड़ा सा error रहता है इसके अंदर. As long as it is playing below 41,804, पहले 41,865 एक रेजिस्टेंस था अप मूव का, वो क्लियरली वो नीचे हो गया है. Now we have gone below 41,804. So there was a dip and then it started bounce back. Again, there is a dip. It is constantly carrying below this. मेरा टारगेट जो है वो मैंने जैसे मेंटरिंग पार्टिसिपेंट्स को बताया. सो ऑन माय लेफ्ट इज माय index, on the right side is the derivative chart.
So my first target is for 428 for this trade that I'm on. This is 42,000 put. So I'm on with this, and hopefully my target is set at for 420. I'm not going to wait for 428. I will exit around 420 whenever it comes. I was expecting it to come today in a before 12 o'clock, but 420 का मेरा 250 का 5 lots हैं. No, not 5 lots. It is 10 lots. So 420 is what I'm expecting. It is trading around 396 right now. I'm peaceful because I know I've made enough cushion in the morning that even if it goes against me, which is unlikely to happen, I will still be fine. I can just remove this so that you get a better clarity chart setting. Just give me a minute. Yeah. So it's already made a high of 414.8, which is fair enough. यहाँ पे आकर के it is likely to take support somewhere here, 14,717 that I explained. And that is when I would like to be neutral, and I would not like to take a trade till the time I get a direction. So this is the logic for my trade. Nifty is now at a support of 18,082. This, if this break, then the fall is right up to the low of the first 5 minutes, which is how much? 18,061. So this is going to be the first support if it this breaks, and which is likely to break. So this is where we are. I'm happy to take any questions. There are about 10 of us here. Happy to take any questions if there are any. You can chat, put it on chat box, or you can one by one unmute and ask. I'm okay with that. Meanwhile, because it is taking support at R1, it is likely to see some kind of a bounce. The whole idea is not to panic, because when RMPS is in place, there is no panic. For me, 10 lots, I'm quite fine with those 10 lots. Questions, with, if any, you can feel free to put it in the chat box, or you can unmute yourself one by one and ask. No questions? Okay, fair enough. If there are no questions, do you want me to wind up the call? Sir, I have asked one question. Actually, I missed something in the middle. ये 18,120 18,120 को जो अपने टारगेट लिया वो थोड़ा मुझे समझा देंगे निफ्टी पे. Sure, sure. So this is the retracement that you're already aware, and this is the level that you will get, right? 18,120. दिख रहा है ये level 18,120 left, ये right वाले window में, almost in the center. So this was the target, because this is where I was expecting the resistance. So 18,120 और 18,140 का level जो कि next pivot है R1 है, वो मैंने लिखा था, और exactly अभी आज का हाई क्या है? 18,134, exactly in between. Rohit is asking, can we enter now in put? You see, you need to understand where you should enter, because we are very close to the target, the put target. So entering now will be risky. It may work, it may not work. So why to get into all that? Anupam, is your question answered? Yes, it's answered. One more question I wanted to ask this. सर कल 2:30 बजे तक ना ये बैंक निफ्टी वीवैप के नीचे था, बहुत वीक था, रिजेक्शन दे रहा था. 2:30 बजे के बाद एकदम से मूव शुरू हुआ है. तो आपने एंट्री, आपने कब, आपने डेली कैंडल में तो मुझे दिखाया अभी, बट आपने कब एंट्री बोला कि नाउ आई शुड टेक एन एंट्री फॉर बीटीएसटी? मैंने कितने बजे बोला था? डज एनीबडी रिकॉल? मेरा चैट मैसेज देखिए जरा.
आपने 3 बजे की रेंज, आप बोला इट विल फायर 3 बजे की रेंज में शायद बोला होगा आपने। राइट फिर डेली कैंडल तो नहीं, डेली कैंडल से तो नहीं लग रहा था। और नॉर्मली ये होता है कि हम रिटेलर 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेते हैं, मतलब पैकअप कर लेते हैं। उसके बाद एकदम से शॉट अप लाइक एनीथिंग, डे डे हाई ब्रेक करके दे वेंट अप। ओके। सो आई वाज ट्रैकिंग निफ्टी, नॉट रियली बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में कल मूवमेंट ना के बराबर था, वेरी लिटिल मूवमेंट इन बैंक निफ्टी. So the whole strength was in Nifty, and if you see, the moment Nifty crossed this level, um, day before 14th, यानी Tuesday का high उसने जब cross किया, so my conviction went up because now I was very clear that we are now headed towards challenging the super trend and then eventually go and hit 18,120. So that is when I said, so if I look at the 1 hour chart, 1 hour chart में ये हुआ है. If you see 215 वाली कैंडल देख रहे हैं आप, ये राइट साइड में, तो यहाँ पे राइट। इसने ब्रेकआउट दिया है. यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इट वेंट अबव दीज प्रीवियस टू हाइज, ये इस हाई को इसने तोड़ दिया, एंड इट क्रॉस्ड अबव 7964 व्हिच वाज द इंट्राडे R1. इसको भी क्रैक कर दिया. देन द नेक्स्ट ऑब्वियसली लेवल वाज हियर. अब इसको 15 मिनट पे देखें अगर, तो 15 मिनट में कल क्या हुआ था, ये देखो, ये हुआ था कल. सो दिस इज वेयर इट हैपेंड एंड दिस इज वेयर द मूव केम 3 o'clock के आसपास. आर यू वाचिंग दिस? ये देख रहे हैं आप? हाँ जी, तभी आपने बोला था सर 3:07 हाँ, मिनट से correct, correct. एक्सपेक्टिंग That I फॉल। said, I think the time is right now because when this high is taken out, then there is a conviction कि अब मैं daily chart पे चला गया हूँ कि now we will hit 18,120. It was a screaming buy at that time. So that is how it happened. So one has to wait for the setup to arrive and then trade. बहुत दिनों से trade नहीं ले रहा था या छोटे छोटे trade लेकर practice कर रहा था. It doesn't matter, छोटा सा profit हुआ है, छोटा सा loss हुआ, doesn't matter. So this also I was not wanting to go beyond my RMPS, and so I realized that I will only take maximum of 5 lots in Nifty, which is almost equivalent to 10 lots in Bank Nifty. So I realized that I will not go beyond that. And sure enough, शाम तक करीब 15-17 हज़ार बन रहे थे उसमें, और I think I invested about 53,000 rupees or something. तो उसमें 15,000 बन रहे थे, वेरी डिसेंट थिंग. सुबह और आगे बन गए. सो दिस इज हाउ इट इज. अभी भी देखो आप यहाँ पे आकर के, ये अच्छा खासा गैप है. दिस मे गेट फिल्ड, द होल गैप मे गेट फिल्ड, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस. दिस इज द डेली चार्ट. मेरे को अपना जैसे ही मेरा टारगेट मिलता है मैं निकल जाऊंगा. सी वी आर एट 403 राइट नाउ. टारगेट इज 428, but I'll exit around 420, which is good enough for me. And just to show you my trading screen, here it is. So I've taken this trade in multiple lots. पहले 50 ऐड करता चला गया. That means दो लॉट. उसके बाद 200 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, 5800 रुपीज और समथिंग. उसके बाद आई वेटेड फॉर इट टू फॉल, देन आई बॉट अगेन स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली. तो आई द वन ऑफ द ट्रिक इज नेवर टू बाय इट इन वन टाइम. नेवर. छोटे छोटे निबल करते चलो. एक लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया, तो दिस इज व्हेन यू आर लिटिल मोर एक्सपीरियंस्ड एंड यू आर एबल टू ट्रेड बेटर. तो वो लेकर के अभी 250 का मेरा नेट है और उसका टारगेट लगा हुआ है. सो इवन इफ आई एम टॉकिंग टू यू, इफ इट हिट्स 420, वो निकल जाएगा. इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग अराउंड 400.85. और बाय द वे माय इंश्योरेंस पॉलिसी इज इंटैक्ट, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि दिस कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव फॉलोड बाय रिवर्सल. तो ये भी हो सकता है. सो आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस, आई एम होल्डिंग ऑन टू माय इंश्योरेंस. What else? अच्छा, you were asking something, Anupam, about the 5 EMA वाली बात, right? हाँ जी सर, 5 AM में। So here it is. So this is the 5-minute chart. So where did I take the entry? My first entry was, so it went below this line, right? So I could have entered here, but I don't enter here. I waited for it to retrace back, touch this line again, and go a little above. यहाँ पे मैंने put लिया.
ये जो इसका लो दिख रहा है ना पहली वाली कैंडल का, रेड वाली कैंडल का, जिसकी बड़ी लॉन्ग विक है नीचे की, ये 9:30 AM वाली कैंडल, इसके पास जैसे ही आया यहाँ पे मैंने पुट लिया, बिकॉज दिस इज वेयर आई एक्सपेक्टेड सम रेजिस्टेंस एंड दैट्स इनफ. सो यहाँ पे आकर के समवेयर हियर आई बुक द प्रॉफिट्स. नाउ आई एम अगेन इन द शॉर्ट पोजीशन एज यू कैन सी, एंड वेन एवर आई गेट माई टारगेट आई विल एग्जिट. खत्म. सी बिकॉज अब ये तंग करेगा till about 1 o'clock or 2:30. There will not be any decisive move. So why to unnecessarily get into that kind of a stress? अपना पैसे निकले, बनो और निकल जाओ. So whole idea is about the exact entry. आ गया, 420 आ गया. So my profit is booked. You all seen it right now. So sold at, let me open this sheet for you. ये ट्रेड्स है मेरे. सो ये तो कल का स्क्वायर ऑफ है. 250 लॉट्स, 250 टोटल क्वांटिटी. ये उसके बाद ये बाय है, ये सेल है. यहाँ पे 5,800 बुक हुआ. उसके बाद ये आई बिन निबलिंग ऑन. पहले 100 ले लिए, फिर 50 लिया, फिर 25 और ले लिया, 50 ले लिया. सो बाय एंड लार्ज माई सेकेंड टाइम में जो मेरी बाय बनी है दैट इज बिटवीन 380 एंड 390, टिपिकली 384 के आसपास. एंड आई एग्जिटेड जस्ट नाउ एट 420. और भी नीचे जा रहा है, बट माई आई डोंट हैव एनी फोमो, आई डोंट हैव एनी ग्रीड. आई नो इट इज लाइकली टू हिट दिस लेवल 41,717 जो मैंने आपको बोली है. ये देखो गया भी, चला भी गया. See, now it is now taking support at the first candle's low. This is where I said. And if this breaks, we are headed here, here, or even here. But that doesn't matter. I have made my money and I'm out of it. मेरा दिन बन चुका है, खत्म हो गई कहानी. So this is actually not 35,000. It is more than that because about 15, 17,000 were made yesterday. This is only telling me today's move. Fair? अभी clear हो गया? I हाँ have जी this chart ये daily, hourly and 15 minutes, which मैं अभी 15 मिनट पे देख रहा था. मैं 5 मिनट पे, मैं 15 मिनट पे वापस आ गया हूँ. So this is where it is. Now, if it continues going down, then the next support level is 41,660. This is for Bank Nifty. So Sagar, you're right. Data is showing intraday bearishness. But at this point in time, I would avoid making any trades. So data जो है वो आप जो बोल रहे हैं वो ये है. The call writers are increasing consistently, and in Bank Nifty and Nifty also. Nifty, the put writers are just running away right now. The call writers are static, but put writers are running away. Sentiment is bearish. Same with Bank Nifty. Sentiment remains bearish. Call writers are slowly increasing, and put writers are by and large at the same level. So if anyone has to take a trade, please wait. Wait for a clear direction now to emerge, because हो सकता है जितनी जोर से गिरा है उतनी ज्यादा जोर से it might just bounce back as well. So that you need to be very careful. Will it bounce back? Maybe, maybe not. Doesn't matter. But why to take chance in this time of the market? Okay. Anyone? Any questions? Any more questions? सर आज के पुट ट्रेड का लॉजिक 5 मिनट ये में ही था क्या? मतलब वो तो पहले आप निकल गए, दूसरा वाला जो पुट ट्रेड लिया आपने वो भी 5 EMA कही थी. ओके वो भी 5 EMA था. Because it was, see, today's high as far as Bank Nifty is concerned was here, right? उसके बाद ये यहाँ जाकर के इसने अगला हाई यहाँ बना दिया. And again it went down. So now I can enter as close as possible to, let me show you again. So this was today's high. यहाँ पे नीचे सर ये गया. 15 मिनट है सर, 15 मिनट पे देख रहा हूँ. Sorry. So thank you, thank you, thank you. Thank you for sounding me. 1 minute. So this was today's high. This was the first entry का signal. यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ के आसपास I took the entry, और उसके बाद जो ये लेवल आई थी, ये इस लेवल पे मैंने एग्जिट कर लिया. फिर उसके बाद ये आइसोलेटेड कैंडल थी, then it was expected to go up, it went up.
but it did not have strength and it closed below this again. I waited for it to come here. It came here. I kept on nibbling some puts as you saw in my trade log. बट मुझे पता था 41,865 के लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए. ये क्लोज हुआ 41,865 के ऊपर पहले, लेकिन उसके बाद टच किया लेकिन क्लोज नहीं हुआ. उसके बाद कंसिस्टेंटली यहाँ पे स्ट्रगल करता रहा जाने के लिए. उसके बाद एक लॉन्ग इसने दोबारा उसी जगह पे आया है. उसके बाद फिर ये टच करता रहा, लेकिन नाउ दी रेजिस्टेंस ऑफ 18,865 वाज एस्टैब्लिश्ड. अब ये था कि ये सपोर्ट कब टूटेगा. ये सपोर्ट यहाँ टूटा. अब नाउ दिस वाज बीइंग चैलेंज्ड हियर, और उसके बाद ये भी सपोर्ट के पास से निकल गया. ये नाउ दिस सपोर्ट वाज देयर. अब ये भी चैलेंज होकर के अब ये इस लेवल को चैलेंज करता रहेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा. सो एनीबडी वांटिंग टू रिस्क कैन प्रोबब्ली टेक अ ट्रेड हियर, बट ज्यादा इसमें कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ से भी बाउंस बैक लेगा, ये यहाँ तक जाएगा इजिली. तो एंट्री इज इंपॉर्टेंट. सो इफ यू मेक अ रॉन्ग एंट्री, नो स्ट्रेटजी विल वर्क. व्हाट एंट्री एट व्हाट टाइम, वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस से आएगा और कुछ नहीं है. दैट्स जस्ट अ प्रैक्टिस थिंग. वही वन लॉट से प्रैक्टिस करना है. ठीक है. I can see some new people here, Rishi, Pulkit, and Rohit. Any queries from your side? You could put it in the chat box, or you can unmute yourself and speak. No queries. I'm fine. So we are done with this call. Thank you, gentlemen. Wait, I think Rishi, thanks a lot. Oh, welcome. You're welcome. I'll be announcing the next program as and when it does get finalized. So anyone who's keen can participate that time. Thank you so much. Have a nice day, everyone. Bye bye.